The Rana couple are out on bail and yet are defying the conditions that were put forth. They led an explosive attack on Chief Minister Uddhav Thackeray after returning home. Navneet Rana, who's the independent member of parliament, accused Maharashtra government of targeting the Rana couple only because they wanted to and intended to recite the Hanuman Chalisa. Now, the couple also declared that they will keep this Hanuman Chalisa face-off going on. Here's more on what happened and what did the couple say. After bail and hospitalization on May 5, Amravati Member of Parliament Navneet Rana did a ghar wapsi on Sunday from Mumbai's Leelavati Hospital. But not without some explosive attack on Chief Minister Uddhav Thackeray and flaunting the Hanuman Chalisa prayer book. Navneet had got bail in the sedition case, slapped after her bid to recite the Hanuman Chalisa outside Chief Minister Uddhav Thackeray's house. Navneet and her MLA husband Ravi Rana were granted bail on the condition of not talking about the Chalisa recital case. She roared and said if reciting the Hanuman Chalisa is an offence, then she will rather be in prison. अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। Rana hit out hard at Uddhav Thackeray, daring him for an election fight and attributing his rise to power to late Bala Saheb Thackeray. उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूं कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं वो वहां खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। मैं कभी भी नफरत की भावना से काम नहीं करती। मैं मेरे लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि खुद से मेहनत करके वो व्यक्ति खड़ा हो और वो चुन के आके दिखाए। फादर के नाम से तो हर कोई जीता है, खुद के नाम बना के देखें तुम्हारे में ताकत क्या है। Navneet Rana's husband Ravi also hit out at the Shiv Sena, adding he'll apprise Home Minister Amit Shah now. जो हमारे साथ हुआ है वो हम केंद्र से न्याय मांगेंगे। केंद्र से उम्मीद है कि हमारे पे जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमको न्याय देंगे और संजय राउत अनिल परब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जो काले चिट्टा जो है वो भी केंद्र से खुला हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। संजय राउत ने तो कहा है कि बीजेपी की बैकिंग के जरिए आपने ये सब किया है, इस्तेमाल किया गया है आपका, ये कहा जा रहा है। संजय राउत मैं बोल दिया है, चवन्नी छाप है, वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का दलाल है और दलाली करते करते उन्होंने पूरी शिवसेना डुबाने का काम भी किया है। The government lawyer has cried violation of the bail condition after Rana's fresh outburst. What will be the Rana's couple next course of action in the Hanuman Chalisa controversy? With Pankaj Upadhyay in Mumbai, Bureau Report, India Today. Relief for Tajinder Pal Singh Bagga as High Court orders a stay on his arrest. It was a midnight hearing by the Punjab and Haryana High Court where the court eventually ordered a stay on any coercive action to be taken against Bagga till the next hearing on 10th of May. But after respite, Bagga, while hailing the High Court's order, accused Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal of suppressing his voice. He added that his fight against injustice will continue. This comes after the Mohali court issued a fresh non-bailable arrest warrant against Tajinder Pal Singh Bagga. Now, the judicial magistrate observed here that the arrest of Bagga was necessary in the interest of justice and to facilitate the investigation. But the BJP, the party to which Bagga belongs, remember, held a protest outside Delhi Chief Minister Kejriwal's house. And not just that,
Goa Chief Minister Pramod Sawant and BJP Yuva Morcha President and MP Tejaswi Surya met Bagga at the residence. Goa Chief Minister called this arrest as kidnapping by the AAP government, while Surya said Bagga was arrested by goons in uniform. AAP has hit back at the BJP and fired a Gunda party jibe at the Saffron party. बहुत कुछ हुआ, हमने देखा कि सियासी हलचल लगातार लगी रही और रातों रात कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़े। कहा यह जा रहा था कि मोहाली पुलिस जो है वो आपके यहाँ पर आपको अरेस्ट करने के लिए आ रही है। क्या कुछ चल रहा है, आप बता पाए तो? देखिए, मुझे न्यायालय में पूरा भरोसा है और जिस तरीके से न्यायालय ने कल फिर अरविंद केजरीवाल के मुंह पर एक तमाचा मारा, जिस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन ने एक अरविंद केजरीवाल की सरकार पे तमाचा मारा है, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल कानून से बड़े नहीं, वो कानून का मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर 100 एफआईआर करे तब भी हमें डरा नहीं सकते हैं। इस देश में अरविंद केजरीवाल का कानून नहीं चलेगा, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून चलेगा। और अरविंद केजरीवाल अगर अपने आप को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से बड़ा समझते हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं, उनका ये गरूर भी ज्यादा दिन रहने वाला नहीं। तजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार करते समय उनको पगड़ी नहीं बांधने दी। शिकायत मिलती है कि ये केसों की बेअदबी की गई क्योंकि उस पर दस्तार नहीं सजाने दी। तो इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन ने पंजाब सरकार को 14 मई के लिए नोटिस दिया है कि हमें 7 दिन के बारे में इस पे पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी जाए, जिसको हम आगे इसका विचार कर सकें और आगे कार्रवाई कर सकें। जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया है, ये सत्य की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये कानून के राज की जीत है, ये न्याय की जीत है और ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो अपनी तानाशाही मानसिकता दिखाते हुए पंजाब पुलिस को अपनी पर्सनल गेस्टापो की तरह इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने की कुत्सित मानसिकता के साथ इस्तेमाल करना चाहते थे। मोहाली कोर्ट का जो आदेश है वो अब आप देखिए, उसमें साफ तौर पे अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। पंजाब की सरकार ने कहा है कि जब हाई कोर्ट की सुनवाई होगी उस वक्त पूरा मामला सामने रखा जाएगा। इस पे हाई कोर्ट ने कल रात को सुन के अब आगे जो सुनवाई होगी उस पे तस्वीर साफ होगी कि क्या होता है। तो ये जरूर साबित हो गया बीजेपी की इतनी पूरी भाग दौड़ और पूरी प्रक्रिया से कि एक गुंडे को बचाने के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। Fresh arrests and IED recovered from Punjab's Tarn revealing a bigger conspiracy hatched to Pakistan in the terror plot busted by Haryana police specifically, and also a joint operation there. Remember, this happened in Karnala, where links to ISI stooge Harvinder Singh Rinda have now been revealed. And a special investigation team has also been formed to probe the case of Khalistan flags that were found tied at the entrance of the Himachal Pradesh Legislative Assembly gate. Himachal DGP has ordered a strict surveillance and barricading of the borders. Here's a report on more. A plot to cause serial blasts. Crowded trains on target. Mumbai's locals on terror radar. Bleed India conspiracy by Pakistan. Aided by Khalistani radicals in India. Sensational revelations in the Khalistani terror plot busted in Haryana. Arrest of Khalistani terrorists from Haryana's Karnala and Punjab's Tarn have revealed a sinister plot hatched in Pakistan with aid of radicalized young men to target Indian cities including Mumbai. After grilling of the suspect, Punjab cops recovered 2.5 kilogram RDX explosive and several mobile phones hidden in a gunny bag from Nowshera, and have made fresh arrests of Khalistani terrorists. The police and other agencies are trying to find out and trying to join all the dots on the basis of the pieces of information being provided by the arrested Khalistani operatives during their interrogation.
The first arrests had taken place last week at the Karnala toll plaza in Haryana, when the 4 terrorists were on their way to Telangana to drop an arms consignment using a Delhi-registered Toyota Innova car. The ammunition, including RDX-laced IEDs, had come from Pakistan-backed Babbar Khalsa International terror mastermind Harvinder Singh Rinda. हमारी विभिन्न टीमें इनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही अलग-अलग राज्यों की पुलिस की टीमें भी यहाँ पर आई हुई है। साथ ही सेंट्रल एजेंसीज और बीएसएफ की टीम भी कल यहाँ टीम आई थी। वो भी अपने लेवल पे जो भी उनको इनपुट चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी कलेक्ट कर रहे हैं। Grilling reveals that Rinda also sent a consignment of RDX to Maharashtra's Nanded in March. टीम जाने के बाद डिटेल्स पता चलेंगे और वो कंसाइनमेंट कहाँ से निकला था, कहाँ पहुंचा था, किसके पास डिलीवरी हुई थी, इस बारे में हम तहकीकात करेंगे। According to sources, the plan was to cause serial blasts in passenger trains and Mumbai locals, at the behest of Pakistan's ISI stooge Rinda, currently believed to be hiding in Islamabad. And amid this terror alert, there was a fresh scare in Himachal Pradesh's Dharamshala. Khalistani flags were found tied at the main gate and the boundary wall of the Legislative Assembly. Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur has now promised strict action. उस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Suffering maximum reverses in Jammu and Kashmir, is Pakistan planning to foment trouble using its Khalistani terror proxies? With Manjeet Sehgal in Chandigarh and Arvind Ojha in Karnal, Bureau Report, India Today. Forces fired a cruise missile at the southern Ukrainian city of Odessa on Saturday and bombarded a besieged steel mill in Mariupol. It appears they are hopeful to complete their conquest of the port in time for the Victory Day celebrations. Ukraine, meanwhile, has announced that all women, children, other adults have now been evacuated from the mill, especially elderly. But it appears that this area is a key Russian war objective. Here in this report. The Russia-Ukraine war has been going on for over 2.5 months now. Putin's army fired a cruise missile at the southern Ukrainian city of Odessa on Saturday and bombarded the besieged steel mill in Mariupol. Hopeful to complete their conquest of the port city in time for Russian Victory Day celebrations on Monday. Amid raining missiles, shells and bombardments in Ukraine, Russia is marking 77 years of victory over Nazi Germany. May 9th is a very important day after the surrender of Germany on the 8th of May. But the Soviet Union played a very important role in the defeat of Germany. But the message loud and clear, that's the Soviet banner. And the message this time around is going to be reminding the world, reminding Ukraine that they were part of the Soviet Union. It's uncanny and eerie that as Russia and many parts of Europe will be celebrating or marking the occasion of the end of World War II in Europe, the defeat of Germany, Russia is on the brink of yet another war. Will it lead to World War III is the big question. Ukraine fears its troops still holed up in the Azovstal plant face massacre after the evacuation of all women, children and the elderly. Ukraine's military flattened Russian positions on a Black Sea island that was captured in the war's first days has now become a symbol of resistance. This is the last place in Mariupol where Ukrainian forces are still occupying. So it seems that in days to come there will be an offensive launched by the Russian side on the Azovstal steel plant to flush out Ukrainian soldiers who are there. Ukrainian counter-offensive is advancing around the second largest city, Kharkiv, a key target of the Russian shelling. Will the fall of Mariupol, timed with the day of biggest celebrations of Russian war capabilities, mark a decisive phase of the Ukrainian war? With Geeta Mohan in Moscow and Abhishek Bhalla in Kyiv, Bureau Report, India Today.
US First Lady Jill Biden made an unannounced visit to Ukraine after meeting refugee children and their mothers in Romania. Jill Biden met and visited a school in Romania's Bucharest first, where she met refugee children and their mothers. She was accompanied by wife of the President of Romania, Carmen Iohannis. Biden then traveled to Ukraine in a surprise visit and met Ukraine's First Lady Olena Zelensky as Russia continued its onslaught in Ukraine. Jill Biden, after her visit, said she wanted to go to Ukraine on Mother's Day to send out a message that this war has to stop and that the people of the United States are standing in solidarity with the Ukrainians. And that's a wrap on this bulletin. Thank you so much for watching. You can always log on to indiatoday.in or download the application on your phones. Have a great week coming up. Thank you for watching.